Hello and welcome everyone in our new class with some of the basic terms of surface chemistry. As we have started with this one first one slide of second one slide of our surface chemistry. Then after we learn or we just look towards this one slide. These points we will be learning. Then after the types we have learned in detailed manner in our previous class, that is adsorption and the absorption. So where adsorption is a bulk phenomena and absorption is a surface phenomena. You're wrong, guys. You're listening just only. You're listening just only. Go in first class and check out what I told you. Adsorption means it is nothing but which phenomena, and absorption means which phenomena. Now I'm not going to tell you what is meant by adsorption and absorption. If you are not recalling, it means you have to watch the previous video again. So I'm jumping to the next slide directly, because you must have to know the basic terms of adsorption and the absorption. Okay, guys? So, very first one phenomena which I asked you just now, and that was related with adsorption. What is mean by adsorption? Adsorption is nothing but the phenomena of higher concentration of any molecular species at the surface than in the bulk. What does it mean? It means simply, wait a minute, let me take pen to explain you. I know, because you must be forgotten the terms which I told you in previous class. So see, whatever this adsorption phenomena is there, where I have told you already, simply consider a container where I have drawn that container by using red pen. Here just I am drawing it by blue pen, and where adsorption, this container is containing one of the liquid. I told there, we considered there, and then after this is nothing but the surface, upper layer or upper it is upper layer. It's quite difficult to draw by mouse. Just try to understand. Now, this is the upper layer, and onto this upper layer we are going to add some of the another molecules, and we are going to add, I told you just now, and whatever these added molecules are there, they are very, very important for our today's class. And why? Because they are important, that you will be clear in some time. But before going towards that point, I must have to tell you, you must have to recall, or I must have to tell you that one point, and that one is adsorption is the surface phenomena. Which phenomena it is? Surface phenomena. मतलब क्या? Adsorption surface पे होता है, ना कि bulk में यहाँ पे जाके होता है. Bulk में जाने वाला phenomena कौन सा था? Absorption वाला. मतलब कि added वाले molecule अगर से आपके मॉलिक्यूल के अपर लेयर से हो करके अपर लेयर से हो करके अगर से वो जा रहे हैं आपके बल्क में, तो उसको हम बोलते हैं कि absorption. Let me clear you guys. Absorption is bulk phenomena. Absorption is a bulk phenomena, and the upper layer पर जो भी molecules add होते हैं, it is nothing but the just addition हो रही है, वो अंदर जाकर के नहीं घुल मिल पा रहे, इसी को हम बोलते हैं adsorption. Adsorption is surface phenomena, whereas absorption is bulk phenomena. Are you clear with this basics of our previous class? Okay, guys. But try to clear every point in the present one video, because अगर से आप लोगों को पहले वीडियोस बार बार देखने पड़ रहे हैं, मतलब आप अच्छे से देख नहीं रहे हो, और अगर से आपको
जिस वीडियो में मैं पढ़ा रही हूँ उसी वीडियो में क्लियर नहीं हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके फिर से देखते जाइए, बेसिक्स क्लियर करिए, फिर ही आपको आगे का पार्ट समझ में आएगा. ओके गाइस, सो लेट मी कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट, एंड दैट पार्ट इज नथिंग बट adsorbent, adsorbate and desorption. अच्छा, तो देखो, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बोला कि जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बोला, ये अपर लेयर है आपके, ये देखिए अच्छे से, हाँ, ये अपर लेयर है आपके liquid का, and whatever this upper layer is there about your liquid, and on to that another molecules you are going to add. What I'm telling you, you have added these molecules, and इसी phenomena को हम क्या बोल रहे थे? Adsorption. क्या बोल रहे थे? Adsorption. So ये जो कुछ भी adsorption है, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको दिखाया था, ये, ओहो, wait a minute guys, slide has changed. Wait. Previous. Wait. Yeah, we are on to the correct slide. Let me take pen to tell you. So what is this? This is nothing but the adsorption. This is nothing but मतलब जो सरफेस पे अदर मॉलिक्यूल जो अपर लेयर पर, मतलब कि आपके लिक्विड के ऊपर वाले सरफेस पे, मतलब कि अपर लेयर पे जो कुछ भी आपके मॉलिक्यूल्स आप ऐड कर रहे हो, इसी को हम बोलेंगे एडसॉर्प्शन. क्या बोलेंगे? मैं यहाँ पर लिख क्यों नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे दूसरे भी टर्म्स बोलने हैं यहाँ पे, इसलिए मैं एडसॉर्प्शन को यहीं पर रख दे रही हूँ. क्योंकि एडसॉर्प्शन जो फेनोमेना है, वो एडसॉर्प्शन फेनोमेना में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर दूसरे मॉलिक्यूल्स आकर के ऐड होते हैं. इज दैट क्लियर? ओके, now we will turn to the next point, and that is nothing but, before going towards it, let me clear some part because I want to explain you some points. Okay, yeah, I want to tell you one of the next term, and that one term is known as adsorbent. What it is? Adsorbent. So see, adsorbent or adsorbate, adsorbent or adsorbate. To explain you both of these terms, they're very easier one. No, don't consider or don't you think that ये बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है और हमें आएगा कि नहीं. तो आपको बहुत अच्छे से आएगा, क्योंकि आप एक एक चीज क्लियर, मैं आपको एक एक चीज क्लियर कर रही हूँ. And what is that? It is nothing but adsorbent and adsorbate. What is mean by adsorbent and what is mean by adsorbate? अच्छे से सुनो. Bent बोले तो जिस पर जिस सरफेस पर आप मॉलिक्यूल्स ऐड कर रहे हो, अच्छे से सुनो, हाँ. The substance on the surface of which adsorption takes place is known as adsorbent. मतलब क्या? ऐसा सब्सटेंस जिसके सरफेस पे, अच्छे से देखो, मैं डायग्राम में दिखा रही हूँ आपको, कंटेनर वाले अपने. क्यों? क्योंकि क्या बोला है हमने एडसॉर्बेंट की डेफिनेशन? द सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एडसॉर्प्शन टेक्स प्लेस इज नोन एज एडसॉर्बेंट. मतलब क्या? एडसॉर्बेंट जो बेंट होता है, जो झुकता है, जिस पर हम एडिशन करते हैं, उसी को हम बोलते हैं एडसॉर्बेंट. Are you getting? Absorption should be this one, that is liquid layer. Liquid layer का ये जो अपर वाला पार्ट होगा, ये जो लिक्विड का अपर लेयर वाला पार्ट होगा, वो किसके जैसे बिहेव करेगा? वो absorbent जैसे बिहेव करेगा. And now we will be moving sorbate. That is nothing but adsorbate. B-A-T-E, B-E-N-T. You should be clear with this. What it is? Adsorbent मतलब जिस पर हम ऐड करने वाले हैं, सॉफ्ट वाली गद्दी पे बैठने वाले हो. तो मुझे बोलो, आप गद्दी पे बैठने वाले हो, मतलब आप कौन हो गए? एडेड मॉलिक्यूल्स हो गए. और वो गद्दी क्या हो गई? गद्दी मतलब गादी जी. जो कुछ भी वो मैट्रेसेस होगी, वो मैट्रेस विल बी ऑफ टाइप एडसॉर्बेंट, जिस पर हम ऐड होने वाले हैं. और हम क्या हो गए? एडसॉर्बेट हो गए. मतलब दिस
how can we define now adsorbate as? We can define adsorbate as the substance which is being adsorbed. The substance which is being adsorbed मतलब add onto the adsorbent, onto the adsorbent, या फिर आप other words में बोलना है आपको तो the substance which is being adsorbed onto the surface of another substance. This is it about your adsorbate and adsorbent. I think you must be clear with the adsorbate and adsorbent. This is nothing but the adsorbate. I think you are clear with this. Now, अच्छे से सुनो, जहां पर हम एडिशन कर रहे थे ये फेनोमेना था हमारा, मतलब कि एडसॉर्बेट हम ऐड कर रहे थे एडसॉर्बेंट पे, तो ये फेनोमेना हमें बोल रहा था इंफॉर्मेशन विच इज रिगार्डिंग एडसॉर्प्शन. व्हाट रिगार्डिंग एडसॉर्प्शन, किसके लिए, किसके बारे में बता रहा था? एडसॉर्प्शन के बारे में. तो अगर से ये वाले मॉलिक्यूल्स जैसे हमने ऐड किए हैं, ऐड जैसे ही किए हैं उसको बोला एडसॉर्प्शन. बट अगर से मैं इन्हीं मॉलिक्यूल्स को निकाल दूं, क्या कर दूं? निकाल दूं. तो इन मॉलिक्यूल्स को जब मैं निकाल देती हूँ तो इन मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोल सकते हैं? इसी प्रोसेस को, मॉलिक्यूल्स को इन मॉलिक्यूल्स को जब मैं रिमूव करती हूँ आपके इस लिक्विड के अपर लेयर से और एडेड लेयर से, तब हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तब हम उसको डिसॉर्प्शन. क्या बोलते हैं? उस पार्ट को जब हम रिमूव करते हैं, ये एडेड मॉलिक्यूल्स जब हम जिस प्रोसेस में रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, यस, व्हाट वी कैन कॉल दैट इज एज डिसॉर्प्शन. व्हाट इज एज डिसॉर्प्शन. यहाँ पर अगर से आपको मेरी हैंड राइटिंग माउस की वजह से अच्छी नहीं आ रही है तो आप यहाँ पे देखो. What is that? Desorption. What is that? Wait a minute, huh? Desorption. It is nothing but, oh, slide has changed. Wait a minute, let me change. Okay. What we can call desorption. Okay. So, क्या बोला था मैंने अभी आपको? The process of removal of an adsorbed substance from the surface of which it is adsorbed. From which it is absorbed, मतलब add. यहाँ पे एक करेक्शन कर लो. एब्सॉर्ब बोल सकते हो या फिर एडसॉर्ब भी बोल सकते हो. क्यों बोल सकते हो? करेक्शन भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जहां एब्सॉर्प्शन में बल्क में जाता है, वो बल्क में जाने के बाद उसको अगर से आप रिमूव कर रहे हो तो उसको भी बोल सकते हो आप डिसॉर्प्शन या फिर एडसॉर्प्शन वाले फेनोमेना को. मतलब ये बी भी रहने दो और डी भी रहने दो. इज दैट क्लियर? ओके. नाउ विद दिस I think you are clear with adsorption process, adsorbent, adsorbate, and desorption. Let me check your points. Let me check your all the definition. What is mean by adsorption? Addition of your molecules. Addition of your molecules onto the layer of your, onto the layer, or you can say onto the surface of your one of the liquid, you can say gases or solid, anything you can consider, any phase you can consider, huh? Then after who will be the adsorbent? The substance which will be available, which will be available to add, the substance which will be available to add or which will be available to take the another molecule onto its upper layer. Adsorbate. Adsorbate is the phenomena in which the molecules which are added onto the upper layer of your upper layer of your that adsorbent. Then ये जो आप मॉलिक्यूल्स आपके ऐड हो चुके हैं आपके किस पर? एक लेयर, मॉलिक्यूल के लेयर पे, तो उसी को हम, इस प्रोसेस को हम बोल रहे थे एडसॉर्प्शन प्रोसेस. बट अगर से इस बल्क में या बल्क में अगर वो जाता था तो वो एब्सॉर्प्शन था. बट यहाँ पर हमने सिर्फ एडसॉर्प्शन के बारे में देखा है. तो एडसॉर्प्शन हुए वाले ये जो मॉलिक्यूल्स है अगर वो रिमूव कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं?
रिमूव कर रहे हैं मतलब निकाल ले रहे हैं हम उन मॉलिक्यूल्स को, तो उसको क्या बोल सकते हैं, इस रिमूवल वाले प्रोसेस को। एडसॉर्ब्ड जो कुछ भी सब्सटेंसेस हमने किए थे, एडसॉर्बेंट जो ऐड किए थे उन वाले, इन वाले ये जो कुछ भी मॉलिक्यूल्स है, ये वाले मॉलिक्यूल्स अगर से जो कुछ भी हम ऐड कर रहे हैं इन वाले मॉलिक्यूल्स को की रिमूवल वाली प्रोसीजर को हम बोलते हैं डिसॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? डिसॉर्प्शन। आई थिंक यू आर क्लियर विद द प्रेजेंट वन phenomena which is like adsorption, adsorbent, adsorbate and desorption. Is that clear to everyone? Just overlook with all these things, just go through the material which I have been provided you on my Google Classroom regarding surface chemistry topic. Okay guys, then after we will so guys, if you are clear with all these basics, then you are ready to grasp the terms which are regarding your surface chemistry. I think our slide is not changing. Let me change the slide. Okay, let me clear the slide, then we will discuss. तो अब आप लोग मुझे बोलोगे कि मैम एडसॉर्प्शन वाले मटेरियल कौन कौन से होंगे, मतलब कि एडसॉर्बेंट वाले मटेरियल्स कौन कौन से होंगे, मतलब हम बेंट बोले तो क्या। अब मेरा क्वेश्चन आता है आप लोगों के लिए, एडसॉर्बेंट बोले तो क्या, एडसॉर्बेंट बोले तो क्या, ओहो ओके, एडसॉर्बेंट बोले तो जिस पर हम ऐड करने वाले हैं अदर मॉलिक्यूल्स, वो तो कौन कौन हो सकते हैं हमारे केमिस्ट्री में, मतलब कि हमारे सरफेस केमिस्ट्री में एडसॉर्बेंट मटेरियल दैट आर लाइक एक्टिवेटेड कार्बन, एक्टिवेटेड एल्यूमिना, सिलिका जेल, मॉलिक्यूलर सीड्स, उन्हीं को हम बोलते हैं जियोलाइट्स, पोलर एंड द नॉन पोलर एडसॉर्बेंट्स। दीज आर नथिंग बट द सम ऑफ द बेसिक एग्जांपल्स फॉर your sake of understanding, for your sake of convenience. Okay, now let me change the slide. Okay, so next point from our syllabus is the difference between adsorption and the absorption. Difference between adsorption and absorption. Okay, so what is that? Here I'm trying to explain you it with the help of diagram. So देखिए, ये जो कुछ भी हमारी एडसॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन फिनोमेना है, ये एडसॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन फिनोमेना अब यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर होंगे। क्यों? क्योंकि एब्सॉर्प्शन बोले तो क्या और एडसॉर्प्शन बोले तो क्या आपको समझ में आ चुका है, बल्क में वगैरह, बल्क में सॉरी, बल्क में एंड क्या बोलते हैं हम, सरफेस वाला फिनोमेना। तो absorption is nothing but the phenomena where your added molecules are entering into your bulk, and that is your soil particles are getting added into the bulk. But whereas you are very very well known with the term, and that one term is adsorption. adsorption में क्या होगा, वो बल्क में जाकर के बैठेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो कुछ भी हमारे एडसॉर्प्शन होता है उसमें बल्क में हमारे मॉलिक्यूल्स जाते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। बट वेराज एब्सॉर्प्शन में वो बल्क में जाते हैं क्या? यस, उसका आंसर होगा यस, बल्क में क्या जाते हैं? मॉलिक्यूल्स। बट एडसॉर्प्शन में क्या होता है? एडसॉर्प्शन में जस्ट एंड जस्ट देखो अच्छे से, इसी लेयर पे, इस लेयर पे, कहां पर? इस लेयर पर ही हमारे क्या हो रहे हैं, हमारे जो कुछ भी मॉलिक्यूल्स हम ऐड कर रहे हैं वो अपर लेयर पर ऐड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? अपर लेयर पर जस्ट ओनली ऐड हो रहे हैं, ना कि वो अंदर जाकर के बल्क में बैठ रहे हैं। और इसी को हम बोलते हैं जहां पर हमारे मॉलिक्यूल जस्ट लोडेड ऑन टू द सरफेस, मतलब एडेड ऑन टू द सरफेस, इज नोन एज एडसॉर्प्शन।
I think you must be clear with adsorption and absorption with the present one slide very, very clearly. Is it, guys? Okay. Now we will be turning to the next point. That is, जैसे कि हमें पता है कि एडसॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन, देखिए ये लेयर एक कंटेनर है, समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए ये जो दिख रहा है आपको, तो वो एक कंटेनर है, और जैसे कि मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था, उस कंटेनर में हमने क्या किया था, उस कंटेनर में हमने क्या किया था कि उस कंटेनर में हमने क्या किया था कि हमारा एक लिक्विड कंसीडर किया था, और उस लिक्विड में हम अदर मॉलिक्यूल, मतलब कि एग यॉल बोलो, एक मतलब अंडे का वो येलो येलो वाला पार्ट आप ऐड कर रही है, या फिर इसी को आप कंसीडर कर सकते हो अलग एग्जांपल में कि आपके पास पानी है और उस पानी में आप पेंट, येलो कलर का पेंट ऐड कर रहे हो। एनी वन ऑफ द एग्जांपल यू कैन कंसीडर। तो देखिए जो भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ऊपर वाले, ऊपर सरफेस पे जस्ट लोड होंगे, उसको इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एडसॉर्प्शन। बट क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स अंदर आकर के बैठ रहे हैं, और उन ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो कुछ भी बल्क में आ रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एब्सॉर्प्शन। उनको हम क्या बोलते हैं, एब्सॉर्प्शन। सो लाइकवाइज दिस, I think you must be pretty clear with the adsorption and the absorption phenomena. So देखिए हमें अगले क्लास में क्या पढ़ना है, types of adsorption or difference between adsorption and absorption also we will learn, because in our syllabus they have introduced that one point, and in your theory exam they ask you a difference between adsorption and absorption. Okay guys, thank you so much for watching my video. Try to continue my videos for clear to clear your surface chemistry, and there will be our exams very soon, that might be MCQ or that might be theoretical. It is not decided yet. Once it is decided, I will inform you. Thank you so much.